Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंत में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Domestic stock indices closed with modest gains. The Sensex climbs above 59,900 points. Nifty settles above 17,750 level. Rupee strengthens by 3 paise against the US dollar, and Brent crude oil prices hover around $96 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 59,900 और निफ्टी 17,750 के स्तर से ऊपर दर्ज हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की मजबूती रही और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $96 के आसपास दर्ज हुए। बम्बई शेयर बाजार के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में आज बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि वैश्विक बाजारों का रुख नकारात्मक था। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स का 0.3% की बढ़त से 230 अंक बढ़कर 59,960 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की मजबूती से 50 अंक बढ़कर 17,787 पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.4% का नुकसान रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today witnessed modest gains. Both stock indices rose even as the cues from the global share markets were negative. Sensex closed above 59,900 mark while Nifty settled above 17,750 level. Sensex climbed 203 points, 0.34% to finish at 59,960. Nifty also gained by 50 points, 0.28% to end at 17,787. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index declined by 0.41% while the small-cap index ended 0.62% down. In the Sensex pack, 19 companies posted gains while 11 logged losses. Maruti surged 5% and Reliance climbed 3.1%. NTPC gained 2.1% and Mahindra added 1.4%. On the other hand, Tata Steel and Tech Mahindra both declined by 2.5% each. Sun Pharma fell by 2.2%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 7 sectors logged gains while 13 logged losses. The auto sector gained 1.7%, energy index added 1.2% and Sun Pharma ended 0.8% up. On the other side, metal sector lost 1.4%, commodities index fell 1.1% and IT sector ended 0.8% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,456 companies gained while 1,996 companies fell. Shares of 115 companies remained unchanged. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का तिमाही मुनाफा 334% के भारी उछाल दर्ज हुआ। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 475 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,061 करोड़ 50 लाख रुपए दर्ज हुआ। उधर अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 3 पैसे की मजबूती से 82 रुपये 48 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स मामूली बढ़त से 111 के स्तर के आसपास दर्ज हुआ। कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पुनीत, किस तरह से आंकेंगे कंपनी जगत के बेहतर नतीजों से, जिस तरह से बाजार में काफी सहारा भी मिला और उत्साह भी नजर आया? क्या सिर्फ यही वजह है कि विदेशी बाजारों का रुख जिस तरह से नकारात्मक था वो भारतीय बाजारों पे बिल्कुल भी नजर नहीं आया? अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर इसका एक छोटा सा असर रहा। बिल्कुल अमित, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीक हमारा रहा क्योंकि इस सप्ताह में हमने जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां बहुत वोलेटिलिटी देखी, बहुत उतार चढ़ाव थे ग्लोबल मार्केट्स में। और ये हमारे लिए काफी वोलेटाइल वीक हो सकता था क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी होती है, जो मंथली एक्सपायरी होती है डेरिवेटिव्स की, फ्यूचर्स ऑप्शन की भारत में, वो भी सप्ताह में होनी थी और ऐसा लगता था कि काफी वोलेटाइल होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि पूरे सप्ताह हमने देखा कि एक स्टेडी अप ट्रेंड मार्केट में रहा और ये सेकेंड वीक इन अ रो है
जब हमने देखा है कि बाजारों में तेजी का माहौल रहा। और एक और खास बात थी कि पूरे 2 जो सप्ताह रहे हैं पीछे, इसमें काफी जो बड़ी कंपनियां उनके नतीजे आए हैं, उसमें कुछ नतीजे अच्छे हैं, कुछ थोड़े नाउमीदी भरे हैं। जैसे अगर आप देखें तो एफएमसीजी और आईटी कंपनीज और मेटल कंपनीज, इनमें हमने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने देखा बहुत अच्छे प्रदर्शन रहा। फाइनेंशियल सेक्टर में पर्टिकुलरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वहां हमने बहुत अच्छे नंबर्स देखे पिछले 2 सप्ताह में। तो मिक्स्ड बैग है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, आपने मारुति के नतीजों का जिक्र किया, बहुत ही उम्मीद से बहुत बेहतर, बहुत अच्छे नतीजे थे। साथ में हम देख रहे हैं कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं वहां भी सिलेक्टिवली अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि जो हमें एक आशंका थी कि बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में कॉर्पोरेट सेक्टर को काफी बड़ी हानि होगी, ऐसा नहीं है। कुछ सेटबैक जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर जो मार्केट हमें बता रही है कि ये मार्केट की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। तो डेफिनेटली मार्केट्स आर डूइंग बेटर। पुनीत, एक चीज और, आज रिजर्व बैंक ने जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के 2034 वाला जो सीरीज है, उसके लिए ब्याज दर में 2.31% की बढ़ोतरी की घोषणा की है और इसको बढ़ा के 7.69% कर दिया गया है। ये अगली छमाही मतलब 30 अक्टूबर से 29 अप्रैल 2023 तक के लिए ये दरें निर्धारित की गई हैं। इसका कितना सीधा असर मानते हैं एक विशेषज्ञ के तौर पे? बाजार में इतना बड़ा अगर रिजर्व बैंक किसी बॉन्ड के रेटों में बढ़ोतरी करता है तो क्या समझा जाए इससे? नहीं, देखिए, ये जो बॉन्ड्स हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर बिकॉज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स इशू करते हैं, और वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो 10 ईयर बॉन्ड से पेग की जाती है, उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं उसको। तो अभी अगर आप देखें तो 10 ईयर बॉन्ड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, उसकी जो यील्ड है वो 7.45 7.5 के बीच में चल रही है। तो उससे ये एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसमें कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का पर्पज ही ये है कि उसको बेंचमार्क किया जाएगा और इसका रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है। यदि कल को इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो रिजर्व बैंक उसको रेट को कम भी करेगा। तो इससे सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। फिक्स रेट जो फिक्स कूपन जैसे कि कहते हैं हम, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करती है ऊंचे दरों पर, तो मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं है ये जी। डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल हाई लेवल पर चल रहे हैं, 7.5 7.6, ये उसको दर्शाता है। पुनीत, जिस तरह से अभी हमने बात करी कि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सूचकांकों में तकरीबन आज 0.5% की गिरावट रही। हालांकि सेंसेक्स में जरूर मजबूती नजर आई, तकरीबन 60,000 ही होता हुआ भी नजर आ गया सेंसेक्स। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप जहां पे बड़ी मात्रा में कंपनियां सूचीबद्ध हैं, वहां पे अगर 0.5% की गिरावट होती है तो क्या माना जाए कि बाजार में तेजी भी है और कंपनी जगत से उत्साहित भी है, लेकिन कहीं न कहीं चिंताएं या चुनौतियां बरकरार हैं? देखिए अमित, ये हमारे मतलब एनेक्डोटल एविडेंस हमारे सामने है कि जो कमोडिटीज है वहां पर हम काफी बड़ी करेक्शन देख रहे हैं, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे कॉटन टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो पेपर हो। करीब सभी कमोडिटीज में ये देखा जा रहा है कि प्राइसेस में काफी कमी आई है। और कमोडिटीज में जब कमी आती है तो जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो जहां पर उसका बहुत फायदा नहीं उनको मिल पाता, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि उनको जो वो इन्वेंट्री जो है उसको वो मैनेज नहीं कर पाते उतना। तो हाई कॉस्ट मान लीजिए इन्वेंट्री उनके पास अगर पड़ी हुई है तो उसका उनको नुकसान होता है। तो कुछ, पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है ये, और जल्दी ही काफी आउट परफॉर्मेंस भी रही है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पीछे स्टॉक मार्केट में। तो मुझे लगता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग थी आज बाजार में, पर बहुत ज्यादा मैं इस बात से चिंतित नहीं हूँ। मुझे लगता है जो एसएमईज का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है और आने वाले टाइम में हम उसको और बेहतर होता दिखेंगे। Puneet, clearly the hedge funds have had a role to play today. FIIs, FPIs were the net buyers to the tune of 1,569 crore rupees. I would like to draw your attention to both the F&O monthly series. Is it being rolled over? Is it going to be bullish now that the FIIs are consistently buying into the market at least for 1 week? And bond yields in the US have come down, relatively speaking. It's still under 4.5% as far as the GSEC treasury yields are concerned. Do you see a diversion of investment from debt to equity, and you see the equity markets in India benefiting from that? So
first part of your question relates to FII buying in India. So we have seen FII buying yesterday, which was about 2,500 crores, and today another 1,600 crores. So which is welcome. And there has been this belief that FIIs have been sellers in the market. If they turn buyers, then we will see a very big turnaround in market sentiment. So 2 days in a row we have seen buying by FIIs. Also, I think this was triggered by the fact that the dollar index has come down to about 110, 111, and which usually triggers inflows, capital inflows into emerging markets. That I think, but I would still say that FII flows are very volatile. We have seen buying today, we could see selling tomorrow, and so I wouldn't say that these are sustained flows. Let's wait and watch. And if they continue like this for a couple of weeks, then probably we will have reason to be cheerful about that. Having said that, the bond yields in USA have come down a little bit from the peaks. Again, because the belief is that the US Fed is now towards the top end of their rate cycle, and will of course raise interest rates next week when they meet. And but I think the markets are coming to the belief that they will not be able to raise rates in a sustained manner beyond maybe a couple of meetings, 2-3 meetings. So to that extent, bond yields, the rally in the bonds will begin hopefully, and the decline that we saw, that will come to an end. Therefore, the yields are rising. It's just market expecting that kind of an outcome. Just looking at today's sectoral performance, the auto index went up by 1.7%. The other sectors were either at par or in the negative or in the red itself. You see FII, FPI buying selectively in the auto index with fundamentals being strong. For instance, Maruti results that my co-anchor discussed about the net profit had quadrupled. What does next week hold in terms of fundamentals and sectoral buying by either DIIs or FIIs? So interestingly, the foreign investors, and they've been selling into the Indian markets. In fact, in the first half of this year, there were very big sellers in financial stocks. So banking stocks they sold, but subsequently they have now turned bullish on financial sector, and they're buying back most of those stocks at higher levels. The other major sector where FIIs have been very heavy sellers is the IT sector. In fact, I just received data today, and over the last 1 year, most of the FIIs have reduced their stake in IT companies by almost 30%. So that you can imagine how much huge selling has been there in IT companies by FIIs. Today, there were definitely buyers in auto sector because auto companies' results have turned out to be much better than expected. We are looking forward to other auto companies coming out with better results. But primarily, if you see the performers of this week, the three sectors were really the outperformers. PSU banks, they were the best performers in this week. Automobile companies and realty companies. In fact, realty companies also doing very well. We have seen very impressive buying in realty sector. And selling was noticed in IT sector stocks, metal stocks, so the commodity and FMCG. These three sectors are really, they've seen selling by FIIs. My own take is that FIIs are churning their portfolio. So they have sold financials, although they are buying back financials now. They're selling IT stocks right now. And I hope that sooner than later they will realize that there is enormous value in Indian IT services companies. They probably will come back to that. But right now, yes, they're churning their portfolio. We're seeing a lot of tactical moves in the metal sector. Companies like Tata Steel, for instance, going for a stock split, now an amalgamation. Then you have NMDC, which is a public sector metal mining and steel producing companies that has been demerged. Quite a few moves both in the private and the public sector. Why is that happening? Is that to adjust to the expectations of investors, or it's just a board decision to ensure that they are profitable and competitive in the future? What does this mean for those who are seeking to allocate in this particular space? So I think clearly metal companies have been in a sweet spot in the last 2 years. In fact, they have made record profits. Tata Steel and all steel companies and metal companies, they have had the highest ever profits in their lifetime in the past 2 years. And this is the time for them to restructure their operations for sustained profitability in future. So if you look at a company like NMDC that you mentioned, which is a government public sector company, NMDC had a steel plant along with the iron ore operations. So they demerged the two. So core business, which is iron ore mining, they have kept,
and they've spun off the steel sector, the steel company, and they're going to sell off the steel company. They've already stated that. So that encashing that the upcycle in steel sector and the upcycle in commodities. So clearly, most of the metal companies which have had a very good run in past 2 years, they want to improve their profitability, they want to reduce the debt, and therefore we see this kind of a churning and restructuring, which I think is very good for India's industry, because in future, these commodity companies, these infrastructure companies, I would say, will become very profitable and very, very, important to the overall Indian economy. पुनीत, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जो एमएसएमई सेक्टर है जिसका प्रदर्शन खासतौर पर जब कमोडिटीज के प्राइसेस काफी ऊंचे नीचे रहते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा नहीं उठा पाते, तो ऐसे समय में हम जब मानते हैं कि चुनौतियां कम नहीं हैं, तो अगला जो तिमाही है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए किस तरह से आंकते हैं आप? और साथ ही साथ अगर सेंसेक्स टैक्स या बाजार की हम बात करें तो उसमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपके हिसाब से अभी बहुत बेहतरी की संभावनाएं फिलहाल मौजूद है? देखिए अमित, आपने सही कहा, जो एमएसएमई सेक्टर है वो उसके सामने काफी चैलेंजेस रहते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है वो वर्किंग कैपिटल का रहता है। और जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं और जब कमोडिटीज में हम बहुत तेजी देखते हैं, महंगाई आती है, तो वो उनके लिए वो प्राइसेस पास ऑन करना मुश्किल होता है। जब प्राइसेस नीचे आते हैं कमोडिटीज के, उनका पैसा नहीं होता है कि वो सस्ते दाम पर कमोडिटीज को स्टॉक कर पाए। तो इसलिए हमने ये बात करी कि भाई जो कमोडिटीज है उसके जो उतार चढ़ाव है उसका नुकसान तो होता है एमएसएमईज को, लेकिन फायदा उसका कम हो पाता है क्योंकि वो उसको उनका फाइनेंशियल मसल नहीं होता। और इसके साथ जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की हमें एक आशंका है आने वाले टाइम में, मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर्स के सामने काफी चुनौतियां रहेंगी इसको लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर भी, सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो सरकार की तरफ से जो भी एक टारगेटेड सपोर्ट प्लान जरूर होगा एमएसएमईज को, क्योंकि एमएसएमईज बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है इकोनॉमी का, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करते हैं और सबसे ज्यादा इकोनॉमी को गति वो देते हैं, ग्रोथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर को एक सरकार की जरूर हेल्प की जरूरत होगी नेक्स्ट ईयर, और मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर ऐसा करेगी। रुपए के बारे में अगर बात करें तो रुपया तकरीबन डॉलर के मुकाबले मामूली चाहे कहीं भी हो, लेकिन एक ना एक मजबूती सा बनाए हुए है या एक रेंज बाउंड हो गया है, तकरीबन 82.5 रुपए के आसपास रहा है। इसको किस तरह से देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया, जहां अन्य मुद्राएं इतनी तेजी से हैं, हालांकि अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आपने दोपहर को भी ये कहा था कि डॉलर इंडेक्स में भी अब वो ऊंचाई नहीं रही जिस ऊंचाई का दबाव हर मुद्रा पर आ रहा था। बिल्कुल, तो पहली बात तो ये है कि डॉलर इंडेक्स में वो मोमेंटम जो था, जो हम पिछले एक साल से देख रहे थे, वो मोमेंटम में कमी आई है, और मुझे लगता है कि वो मोमेंटम आने वाले टाइम में वो रिवर्स करेगा और थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स नीचे और आ सकता है। ये उसके साथ अगर हम देखें कि जो भारतीय करेंसी में जो भी डिप्रिसिएशन आया, वो बाकी जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज थी या बड़ी करेंसीज भी थी, उनके मुकाबले हमने कम गिरावट देखी थी, रुपये में मजबूती बनी हुई थी। हालांकि हम 82 रुपीज पहुंचे, करीब करीब 10% आप कह सकते हैं कि भारतीय करेंसी में गिरावट आई, लेकिन अगर दूसरी करेंसीज को देखें तो वहां पर 18 से 20% तक गिरावट आई है। और जो चाइना की इकोनॉमी, जो कि बिल्कुल वहां पर रिजर्व बहुत ज्यादा है और ट्रेड सरप्लस है बहुत बड़ा, $1 ट्रिलियन का, वहां भी हम देख रहे हैं कि करेंसी में गिरावट आई है, और ये युआन जो है वो करीब 7.25 के स्तर को तोड़ करके वो आगे निकल गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी करेंसीज के ऊपर प्रेशर है। मेरा अपना अनुमान यह है कि आने वाले टाइम में अब और देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य यह नहीं रहता कि कोई प्राइस लेवल वो टारगेट करते हैं रुपये का, एक्सचेंज रेट का, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रुपया जो है बहुत फ्लक्चुएट ना हो, जिससे कि जो इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वो उस वजह से फंस ना जाए कि आपने ऊंचे दाम पर मान लीजिए डॉलर इंपोर्ट कर लिया और डॉलर के दाम गिर गए तो इम्पोर्टर को नुकसान हो जाएगा या एक्सपोर्टर को चैलेंज होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं चाहता कि फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, वो स्टेबल करेंसी रेट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मुझे लगता है कि टू दैट एक्सटेंट वी हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स। Puneet, very briefly, even though we don't talk about individual stock performance, Reliance Industries went up by 3%, and because of its 11% weightage on the NSE Nifty, we saw the markets in fact go up by 203 points if you look at the Sensex, or 50 points for the Nifty. Why is there a buying interest in Reliance Industries and it raising the Sensex and Nifty performance, where their profitability has been flat? Only Jio has done very well, 28% rise year on year.
So, Arjun, market, first of all, Reliance is a very, very large component of the Indian economy. It is a very large component of the Nifty 50 index. So, it is a very important, I would say systematically, it is a very important company. Of course, after the latest results, markets perceive that the company will be able to unlock value in its various verticals. And although the oil to consumer, the oil business has not done very well in the last quarter, the retail business and the telecom business are still doing very well. So I think market is kind of taking that hope that as things pick up, the company's profitability will go higher, and definitely it's a very stable company. So I think that is one of the reasons why investors found it very attractive on a relative basis to invest in this company. नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। अमेरिकी शेयर बाजार के असर से एशियाई बाजारों में आज मंदी का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 3.7%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 2.3% की भारी गिरावट में रहा। जापान के निक्केई और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 1% की गिरावट रही। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.5% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.1% से 0.5% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Very briefly, the Asian stock markets, Hang Seng and China Shanghai Composite, have fallen between 3 and 4%. Why is that the case? See, Arjun, if you look at the whole week, the Chinese stocks have really taken it on the chin. They're down by about 10 to 15%, if you ask me. And in fact, the Chinese indices, the select companies, are down by more than 40-50% in last 1 year. So clearly, Chinese stocks have been underperforming because the world does not have enough confidence in the current Chinese leadership to invest further capital into the country. And also, we looked at data for the last 10-15 years. Let me tell you, you'll be surprised that no investor who has invested in China in the last 15 years has been able to make any significant money. Because the market indices are still lower than where they were 10 years, 12 years back. So you can imagine that the Hang Seng Index, for instance, is at a 13-year low. So it tells you that Chinese markets are not very attractive for global investors. पुनीत, जिस तरह से आपने अभी जानकारी दी कि जो चीन के सूचकांक हैं वहां पे तकरीबन 15 साल पे ही इस स्तर पे बने हुए हैं, क्या ये इस तरह की स्थिति भारतीय बाजारों के लिए एक अवसर के रूप में देखी जा सकती है? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास डेटा है जी। से करीब 10 साल पहले मॉर्गन स्टैनले का जो इंडेक्स था, ग्लोबल इंडेक्स था, उसमें चाइना का वेटेज 16% था और भारत का वेटेज था वो 2% था। अब जो लेटेस्ट डेटा है वो ये है कि चाइना का वेटेज 15% है और इंडिया का वेटेज 13% है, 13%। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू चाइना इन एंड मॉर्गन स्टैनले इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्सेस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स का कितना बड़ा रुझान अब भारत के प्रति है। Let's have a look at the US market now. US stocks are mixed and world equities eased off a 5-week peak yesterday as the dollars decreased the rate of commodities and lowered treasury yields. Investors had a disappointing earnings from US heavyweights against hopes that the Fed Reserve will slow its aggressive pace of interest rate hikes. The Dow Jones Industrial Average surged to 0.61%, while the S&P 500 declined 0.61% and the Nasdaq Composite Index shed 1.63%. Puneet, the Nasdaq Composite Index fell by 178 points, and this index has been in the news because Twitter has been acquired by Elon Musk, according to the latest news report. So why is it that we are seeing Nasdaq fall so heavily, and it's not the first time? And what does this mean for Twitter and Elon Musk? So 2-3 important points. One is that Nasdaq has been really underperforming the broader markets for the last many months now, and it has lost more than 45% from the peak, whereas Dow Jones is down by about 20-odd%. So you can imagine that tech companies in USA have really taken a hit in terms of valuations. Most of the top companies, if you look at Facebook, Amazon, Netflix, all the top companies, they have lost more than 50-60% from except maybe Microsoft, which is down by 30%, but most of the other tech stocks are down by 50-60%. So technology is really out of favor in US because the numbers that they are coming out with, the profitability numbers and the growth numbers, they are not very, very, very positive. So clearly, I think that is a major hit. Twitter, of course, is a different story because there Elon Musk has bought the company and he's taken it private. So he's buying out all the shareholders. And so in future, Twitter will operate as a private company and will no longer be listed on the Nasdaq or the New York Stock Exchange. So Twitter's journey from here on will be a very different journey compared with other public companies.
Plus, if they hire the top management team, the liability is $88 million, which also includes top management personnel of Indian origin. Yeah, that everybody knows. I mean, they were not on good terms at all. I mean, the top management of Twitter, of outgoing management, was at big loggerheads with Elon Musk. In fact, the first Musk wanted to walk away from this deal. He did not want to buy this. It's a $44 billion deal where he has put in almost $30 billion of his own. He's borrowed some $13 to $14 billion to go private. It's a huge financial liability on Elon Musk, and we will know what is the outcome of that. However, therefore, he was obviously unhappy with the top management, and he's fired all of them. But they're okay because they've been compensated very well. I believe more than $90 million have been received by top management in compensation from Elon Musk. So it's okay. It's a win-win for both, I guess. Let's have a look at the oil market now and see if there is win-win here. Crude prices declined after top oil importer China widened its COVID-19 restrictions, though benchmarks were poised for a weekly gain on supply concerns and surprisingly positive economic data. In intraday trade, Brent crude was trading at $96.45 per barrel, while WTI crude prices were at $88.40 per barrel. Puneet, despite the rise in crude prices, it's not making that kind of a news impact where inflation is a cornerstone of a central bank policy. Why is that the case? See, the point is that, of course, oil is a very political commodity. So we can't link it purely to economic trends. Arjun, believe me, when I talk to companies today, most of the commodities are down by 30-40%. Cotton, oil, the edible oils, everything. I mean, so I think crude oil alone, while it exerts some pressure on inflation, the fact that all of the commodities are in downtrend will eventually bring the inflation numbers down. So oil alone will not influence it. Crude oil alone will not be able to influence it. Of course, it creates huge pressure on countries like India. But I don't think crude oil prices alone will be enough to keep inflation numbers high. पुनीत, ये जो कच्चे तेल की कीमतें हैं कितनी दबाव में रहने वाली हैं और कब यहाँ से राहत भरी खबरें मिलने की उम्मीद है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंताएं निरंतर जारी रहती हैं, कभी चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या कुछ और तरीके की चिंताएं हैं. कब यहाँ से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ सकती है? क्योंकि निरंतर $90 के ऊपर बढ़ने ना कहीं चिंताएं तो बना ही रखेगा. नहीं, आप सही कह रहे हैं और इसकी ये एक परेशानी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर करीब 3 से 6 महीने बाद, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कूल ऑफ होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है. नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कि जो जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां पर वो डेटा में आप देखेंगे इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा और ग्रोथ भी नीचे आएगी. तो डेफिनेटली उस समय क्रूड ऑयल के ऊपर काफी प्रेशर होगा. मुझे लगता है कि इसमें 6 महीना हमें और लगेंगे. जी, नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 240 रुपए की गिरावट से 50,500 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. चांदी भी 440 रुपए के नुकसान से 57,840 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट से $1,654.80 प्रति औंस और चांदी $19.30 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई. पुनीत, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो तकरीबन 2,000 से $1,600 के करीब सोना रहा, और अगर भारतीय बाजारों की बात करते हैं तो तकरीबन 50,000 के आसपास सोना बना हुआ है. हालांकि अगले सप्ताह के बाद से वापस से चूंकि भारत में वैवाहिक सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो वो क्या त्वरित इसमें उछाल देखने को मिल सकता है या कहीं ना कहीं सोने के दामों में इस तरह से ही एक रेंज बाउंड या एक सीमित उतार चढ़ाव रहेगा? देखिए, ये बात सही है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्राइसेस हैं गोल्ड की, वो जो डॉलर इंडेक्स है उससे ज्यादा लिंक्ड है. आप देखेंगे कि जब भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो सोने में थोड़ी तेजी आती है और वाइस वर्सा. तो मेरा अपना अनुमान यही है कि गोल्ड में हम थोड़ी तेजी देख सकते हैं, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स में कमी आती है तो डेफिनेटली गोल्ड की डिमांड वो बढ़ेगी, भारत में भी और पूरे विश्व में भी. पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद. धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर. घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त. सेंसेक्स 59,900 और निफ्टी 17,750 के स्तर से ऊपर दर्ज हुआ. डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की मजबूती रही और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $96 के आसपास दर्ज हुए. And that's all in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.